Hey everyone, welcome to the online session of Manu Law Classes. My name is Brijesh. I'm the English faculty at Manu Law Classes. In today's session, I'm going to discuss 5 words which have been taken from the Hindu newspaper. So let's get started. The first word in the list is credence. Credence is mental acceptance as true or real. हम लोग जिस पे believe कर लेते हैं mentally, that is credence. Since you have a history of lying, I find it difficult to give credence to anything you tell me. So this is the example of some person, maybe that person always lies. तो अगर उस पे विश्वास कर पाना, ये हम नहीं मान पाते कि ये विश्वास के योग्य है, right? Another example is the jury found it hard to give credence to the testimony provided by the convicted felon. अब felon मतलब क्या होता है and felony क्या होते हैं? Felon means a crime and felon is the person who commits the crime and felony on the other hand is a crime. ऑलराइट, सो जूरी जो है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है किसी ऐसे व्यक्ति के टेस्टिमनी पर क्रेडेंस करना जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड है किसी क्राइम के लिए. ऑलराइट, सो सिनोनिम्स आर ट्रस्ट एंड एश्योरेंस. सो क्रेडेंस कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड विद द टर्म ट्रस्ट एंड द एंटोनिम्स आर डिनायल एंड डिसबिलीफ. The next word in the list is corrosive. Corrosive is having the ability to wear down or to destroy. So corrosive मतलब something that can destroy. So for example, because the battery is corrosive, you should not touch it with unprotected hand. So कोई बैटरी मान लो अगर आपके घर में जो इन्वर्टर बैटरी होती है, they are very dangerous, तो उसे unprotected hand से नहीं टच करना चाहिए because they are corrosive, they are vitriolic and caustic. The other example is the corrosive chemical have damaged the carpet. तो आपने देखा होगा carpet जो होते हैं धागे से बने होते हैं, अगर उस पर कोई केमिकल गिर जाता है तो वो खराब हो जाता है. Corrosive chemicals, ठीक है. So synonyms are caustic and vitriolic, and gentle and nice are the antonyms of corrosive. The next word in the list is calumniate. देखो, calumniate is to make maliciously or knowingly false statement about. किसी चीज के बारे में जानबूझकर false या गलत information देना. For example, if the tabloid continues to calumniate the actor, it will be hit with a lawsuit. अगर कोई व्यक्ति है जो किसी एक्टर को जानबूझकर फंसाना चाहता है तो बोल रहा है कि ये लॉसूट फाइल करेंगे उसके लिए. Another example is the dishonest man calumniates his own mother in order to make front page news. ठीक है. So जो dishonest man जो है वो क्या कर रहा है, अपने own mother के बारे में maliciously कुछ बोल रहा है ताकि उसका जो न्यूज है वो फ्रंट न्यूज पे आ जाए. Alright, so defame करना किसी को, asperse, defame and calumniate are the similar words. So defamation, calumniation, both are same. So honor and exalt are the antonyms. The next word in the list is cantankerous. Cantankerous is easily angered, always complaining or arguing and difficult to get along. 3 बातें. ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी से गुस्सा दिलाया जा सके, जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है या झगड़ालू हो या जिसके साथ मिलकर काम करना is difficult. Alright, so examples are the leading character in the movie was a cantankerous old man who hated the world. So एक old man है जो cantankerous है, वो कैसा है, चिड़चिड़ा है, झगड़ालू है, जिसके साथ get along नहीं किया जा सकता, वैसा है. Another example is by nature bulls are cantankerous animal that prefer to be left alone. आपने देखा होगा bulls जो है बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, so they are cantankerous. तो कोई भी ऐसा पर्सन या व्यक्ति जो बेसिकली बहुत जल्दी आसानी से इरिटेट हो जाए या बहुत कंप्लेनिंग करता हो, they are cantankerous. So quarrelsome झगड़ालू, ill tempered मतलब बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला. Amicable on the other hand and peaceful are the antonyms of the word cantankerous. The last word in the list is capitulate. आपने recapitulate सुना होगा, that is a different thing. Recap. This is capitulate is to surrender under certain terms. तो एक होता है surrender कर देना पुलिस को, एक होता है किसी सिचुएशन को भी surrender कर देना. दोनों एग्जाम्पल डाल रखे हैं मैंने आपके लिए. After seeing himself on the news, the escaped convict decided to capitulate to avoid being shot by the police officer. तो आप समझ सकते हो, this is for surrender before police. The other example is the two countries agreed to capitulate a 24-hour ceasefire on the holiday. तो जनरली एक ट्रीटी होती है जिसमें कि अगर कोई दो वारिंग कंट्रीज आपस में वार कर रहे होते हैं तो उस ट्रीटी की वजह से उनको सीज करना होता है, उस फायर को रोकना होता है. So that is capitulate, surrender कर देना certain terms पे, right? So give in or quit कर देना. Resist and retain are the antonyms. So let us see the words that we have discussed in this video today. First word is credence, means believable
or trust. Next is corrosive, means something that has the power to destroy. Calumniate is to make a false statement about somebody, to malice. And cantankerous is a person or thing that can be easily provoked or angered. Capitulate is to surrender. I hope you have understood all the words discussed in this video. Thank you so much for watching the video till the end. Stay tuned, stay learning. Thank you.